Art Deco emerged as a definitive visual language of early 20th century modernity, जिसमें मशीन एज इनोवेशन और लग्जूरियस क्राफ्ट्समैनशिप का सिंथेसिस हुआ। ये मूवमेंट सोसाइटी की ऑप्टिमिज्म, टेक्नोलॉजी पे फेथ और हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस से रैडिकल ब्रेक को आर्किटेक्चर, डिज़ाइन और पॉपुलर कल्चर के थ्रू एक्सप्रेस करता है। As explicitly stated, Art Deco was a deliberate turn away from Art Nouveau's organic forms and Beaux-Arts historicism. इसने मशीन एस्थेटिक को सेलिब्रेट किया, क्यूबिज्म, फ्यूचरिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म से इंस्पिरेशन लेकर इंडस्ट्रियल एनर्जी को बोल्ड ज्योमेट्री और स्ट्रीमलाइंड फॉर्म्स में ट्रांसलेट किया। एग्जाम्पल, क्राइसलर बिल्डिंग, वैन एलन के डिज़ाइन, क्रोम, बेकलाइट और री इन्फोर्स्ड कॉन्क्रीट सिंबलाइज करते थे टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस, while exotic woods, ivory and lacquer maintained a link to luxury craftsmanship. आर्ट डेको एक कॉन्ट्रडिक्शन था। एक तरफ ये इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजी पे फेथ दिखाता था, दूसरी तरफ हैंडक्राफ्टेड ऑपुलेंस को भी ग्लोरीफाई करता था। दिस रिफ्लेक्टेड इट्स ओरिजिन्स अमंग elite patrons and its showcase at the 1925 Paris Exposition, a celebration of luxe modernity. बाद में टेक्नोलॉजी के साथ ये डेमोक्रेटाइज हुआ मास प्रोड्यूस चीज़ों में, बेकलाइट रेडियोस, क्लॉक्स, स्ट्रीमलाइन मॉडर्न डिज़ाइंस। Architecture. Picture the skyline. Soaring skyscrapers stretching upward, dressed in sharp geometric patterns, their surfaces alive with light and shadow. Each building was a monument to ambition, carved into the skyline. Visual arts and graphic design. On canvases and posters alike, a bold new spirit emerged. Simplified shapes, striking colors, stylized figures. In Tamara de Lempica's paintings and Cassandra's posters, you can feel the same rhythm, structure and monumental power. Decorative arts and design. फ्यूचर हो या ग्लास वर्क या क्लॉक्स, सब में एक लग्जरी का चार्म था। रूलमैन के एबनी और आइवरी कॉन्ट्रास्ट, द शिमरिंग ग्लास ऑफ लेलीक एंड डॉम, ब्रांडेड का रॉट आयरन, सभी चीज़ें ज्योमेट्री के साथ एक्सपेरिमेंट करती थी। और 1922 के बाद इजिप्शियन मोटिव्स एडेड एन एक्सोटिक एल्योर। फैशन, फ्लैपर ड्रेसेस की फ्री फ्लोइंग सिलुएट्स, bobbed hair or bold jewelry. But it was more than just style, it mirrored the daring energy of the moment and a break from tradition. Cultural ambience. The world was intoxicated with jazz rhythms. Josephine Baker की stage presence, Busby Berkeley के glittering spectacles. This was the roaring 20s, an age of energy, glamour and unapologetic heroism, global reach or evolution. While born in Paris, it flourished internationally. NYC skyscrapers, Bucharest apartments, Miami's tropical deco. It evolved significantly, from early deco's lingering neoclassical influences to lavish high deco, and finally to the more austere, aerodynamic, streamlined modern of the 1930s Depression era, prioritizing cost efficiency and curves. Art Deco marked the peak of decorative modernism, just before the cleaner lines of mid-century modern took over. Its spirit still lingers today in the sleek revival of Neo-Deco architecture, in films like The Great Gatsby and the imagined world of Bioshock's Rapture, and in graphic design that continues to draw on its glamour and bold geometry. Yet, like the era itself, it carried contradictions. It radiated optimism but also reflected exclusivity and colonial influences, seen in its love for rare materials like ivory and shark skin, and in the craze for exotic motifs such as Egyptomania. And while it dazzled with luxury, its reliance on handcrafted detail made it difficult to bring to the masses at first. Art Deco सिर्फ एक stylistic trend नहीं था, ये एक era का material manifestation था। इसने tradition और modernity, handcrafted luxury और machine production, elite exclusivity और mass culture के बीच की tension को capture किया by fusing geometric rigor derived from the machine and avant-garde art with the desire for opulence and spectacle. Art Deco created a visually powerful, globally resonant language that defined the interwar period's faith in progress and continues to symbolize timeless glamour and modernist aspiration. Paris से start होके streamlined modern तक का evolution 20th century के social और economic shifts का reflection है। आज भी अगर आप The Great Gatsby का film set देखो या एक vintage radio या मायमी की डेको streets पे walk करो, तो वो timeless glamour और modernist aspiration feel alive. Art Deco makes one thing clear. Design isn't only about form and beauty. It's about the ambitions and anxieties of its time.